Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं रूरल वॉइस के एडिटर हरवीर सिंह। हरवीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Lok Sabha passes the Finance Bill 2023. GST appellate tribunal is set up across the country, and key domestic indices close with losses of more than 0.5%. Sensex slips by 398 points. Nifty settles below 16,950 level. लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 पारित। देश भर में स्थापित किए जाएंगे जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल और घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली से प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक घाटे के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 398 अंक लुढ़का, निफ्टी 16,950 के स्तर से नीचे आया। In our top story, Lok Sabha passed the Finance Bill 2023 with over 45 amendments today. The Union Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman, tabled the bill in the House. 20 more sections have been added to the bill. The bill passed by voice vote. With the passage of the Finance Bill, tax proposals announced in the budget would be passed. The budget envisages an expenditure of around 45 lakh crore rupees for the financial year starting April the 1st. The budget for the year 2023-24 has been passed in the Lok Sabha yesterday. The Finance Minister moved the demands for grants for 2023-24 and the relevant appropriation bills for discussion and voting. The Speaker then applied the guillotine and put the demands for grants of all ministries for voting, and they were passed. Briefly, for the benefit of our listeners, how important is a finance bill passage right now? Yes, finance bill is most important thing because it is a law after passing the bill and particularly on taxation issues. That new amendments or new taxes or changes proposed in the budget comes into being through the finance bill and other provisions. So we're talking about appropriation here by the government departments and agencies and the fiscal policy in terms of what the expenditure is going to be and how revenue is going to be raised through taxation. Yes, because it requires parliament approval. Without that, you cannot do this. That's why there is a set process for all these things. लोकसभा में आज वित्त विधेयक पारित किए जाने के बाद पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ट्रिब्यूनल की प्रधान शाखा नई दिल्ली में होगी और अनेक राज्यों में इसकी शाखाएं स्थापित की जाएंगी। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन होगा। हरवीर जी, यानी कह लें कि इस खबर की अहमियत और किस रूप में जीएसटी को लेकर जो विभिन्न स्थानों पर विवाद होते हैं या कह लीजिए कि समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका समाधान हो सकेगा, यह हम आम श्रोताओं के लिए समझना चाहेंगे। देखिए, देश भर में अगर चुनिंदा वस्तु आप छोड़ दें, अब जीएसटी लागू है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू है, तो उसमें पूरा टैक्सेशन एक तरीके से यूनिफॉर्म करने का ये प्रयास था, जिसको कि सरल तरीके से पूरे देश में लागू किया जा सके और टैक्स इवेजन को रोका जा सके। तो उसका ये एक बड़ा मकसद है। अब क्योंकि ये लागू है, अब जाहिर सी बात है कि कई सारे मामले ऐसे भी होंगे जिनमें विवाद पैदा होता है। अब उसके लिए देश भर में ट्राइब्यूनल होंगे तो लोग अपनी शिकायत लेकर के वहां जा सकते हैं और जो सरकार का पक्ष है वो भी अपनी बात वहां रखेगा। तो उसके हिसाब से ट्राइब्यूनल उन मामलों का निपटारा करेंगे और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जगह आप सेंट्रलाइज नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि वो सर्वोच्च संस्था के पास आएगा, अगर कहीं पर कोई मतभेद होगा, कुछ होगा, तो
ये एक मेरे ख्याल से इस जो नई व्यवस्था है कुछ वर्षों पहले जो लागू हुई है उसको और बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण कदम है। आइए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार लाने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार लाने संबंधी कई अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये समिति पेंशन के मुद्दे पर विचार करेगी और एक प्रस्ताव लाएगी। ये प्रस्ताव कर्मचारियों की वित्तीय सावधानी सुनिश्चित करने वाली आवश्यकताओं को संबोधित करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की स्वीकृति के लिए नए प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हरबीर जी, यहाँ पर जो राष्ट्रीय कह लें कि पेंशन प्रणाली है उसमें कई राज्यों में हम देखते हैं कि चुनाव होते समय यानी अलग अलग लोक लुभावन वादे किए जाते हैं और अब जो नई समिति है क्या ये दोनों के बीच में समन्वय वाला एक प्रयास है या किस दिशा में यह समिति अपने काम को अंजाम देगी? असल में देखिए जो न्यू पेंशन सिस्टम आया 2004 से उसके बाद के जो भी कर्मचारी हैं उनको नई व्यवस्था के तहत उनको पेंशन मिलेगी जिसमें उनका जो उनके जो योगदान होता है और उसके बराबर सरकार अपने पास से योगदान देती है। वो सारा पैसा डिपॉजिट होता रहता है और रिटायरमेंट के वक्त 60% उनको मिलता है, 40% कंपल्सरीली पेंशन के लिए जाता है। तो अब उसमें न्यू पेंशन सिस्टम यही था कि कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है। पहले उसके पहले की व्यवस्था ये थी कि जो कर्मचारी थे उनका जो अंतिम वेतन होता था उसके आधार पर उनकी पेंशन तय होती थी। तो उस व्यवस्था को क्या माना गया था कि फिजिकली बहुत लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं है और लंबी प्रक्रिया और चर्चाओं के बाद पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी और नया पेंशन सिस्टम भी आया। तो ये अब इसको लेकर के कुछ लोगों का सेटिस्फेक्शन नहीं है और कई राज्यों ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की है। तो राजस्थान ने, पंजाब में भी बात हुई, हिमाचल में उस तरीके का। सो अब सवाल है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी राय ये है कि ये बहुत प्रूडेंस नहीं है फिजिकली, लेकिन अब एक होता है कि एक धारणा बनती जा रही है। तो सरकार का मानना था कि ये जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है जिससे कि रिटर्न और बेहतर हो सके। अब जाहिर सी बात है ये जो कमेटी बनी है ये कमेटी अपने सुझाव देगी और सुझाएगी कि और क्या उसको बेहतर करने की कोशिश की जा सके। तो उसमें ये होगा कि शायद वो एक जो लगता है कि उस तरीके के रिटर्न नहीं आ सकते या उस तरह की पेंशन नहीं होगी, उस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करे। In more news, the Centre today hiked the Securities Transaction Tax (STT) on the sale of future and options contract by up to 25%. In the amendments to the Finance Bill 2023, the Securities Transaction Tax has been hiked by 23.52% on the sale of options and 25% on the sale of futures contracts. STT was introduced in 2004 and is levied on transactions involving different types of securities through the stock exchange route. All stock market transactions that involve equity or equity derivatives are liable under the STT, including mutual fund transactions. STT for intraday trades is charged at 0.025% on the sell side. For delivery transactions, it is charged at 0.1% on both the buy and the sell sides. STT on the sale of options has been hiked from 1,700 crores on a turnover of 1 crore to 2,100 rupees, indicating a hike from 1,700 rupees on a turnover of 1 crore rupees to 2,100, indicating a hike of 23.5%. For options, the STT is charged on the premium and not the strike price. On the sale of futures contracts, the STT has been hiked to 1,250 rupees on rupees 1 crore of a turnover against the earlier levy of rupees 1,000. This indicates an increase of 25%. The main idea being this could be to discourage the excessive trade in the F&O segment, where a large number of retail traders end up losing money, as per a recent SEBI study. Very briefly, how do you view this STT tax, especially on the futures and options contract, where the cost of speculating is a lot less when you compare it to the cash market? Yes, actually, if you see the amount, whatever is that, it's not a very heavy amount on such a thing. But government want to regulate it, and one of the objective of this STT is also that all transactions comes under taxes and a record will be there.
So whoever is selling or buying equities or stocks in the market. So and as you already mentioned, there is a SEBI study which says that many newcomer comes to the market and ends up with losing money into that. So to discourage those who are new player in the market, who don't know the basically dynamics of the market so deeply and lose money in the market, I think it's a right step to discourage them. So in a way, when the market price falls of a company because of negative news, we have the F&O segment really lighting up because you have speculation in terms of, say, buying the put contract. Yeah, actually, you see that option is also, it's an instrument which gives you option to exit from the contract. So in that case, but again I'm saying, those who really know the game and the rules of this thing, they are well versed with that, they should play this game. Moving on to more news, the stakeholders are concerned on angel tax provisions to be addressed for startup investments, says Ministry of Finance. As there have been no changes made to the budget's angel tax provisions for investments in startups, the Finance Ministry said that all concerns raised by the stakeholders in implementation of the proposal would be addressed. The draft rules related to valuation shall be shared with the stakeholders for their inputs in April itself, and exclusions currently provided to domestic venture capital funds, etc., shall be considered for similar overseas entities, the ministry assured. This will impact all mutual funds that offer schemes with nomenclatures such as conservative hybrid funds that invest predominantly in debt but have an equity exposure of up to 35% in their portfolios. The Finance Ministry explained that an arbitrage is being created right now where interest income from debt mutual fund where not more than 35% invested in shares in a domestic company is not distributed and converted into long-term capital gains of 20% with indexation. In some cases, it comes to even less than 10% due to indexation. Thus, many taxpayers are able to reduce the tax liability through this arbitrage. Well, it appears that quite a few proposals have been passed, especially when it comes to complicated transactions and how those in the know are able to arbitrage their position, get in or get out depending upon where they are placed presently. Yes, now everybody has to pay the short-term capital gains. So I think this long-term capital gains, arbitrage, and this indexing, and then calculating the tax incidence on an individual or an organization. Now it will not be available. That facility will not be available. And whoever is making money and comes under the tax bracket, wherever the percentage of tax is levied on him, he has to pay according to that. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हरवीर जी, जब आप हमारे कार्यक्रम में हुआ करते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ चर्चा हम अवश्य कर लें, आपके उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के नाते। केंद्र ने कहा है कि देश में कई राज्यों में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता रही है। लोकसभा में लिखित उत्तर में उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस बारे में आपात योजना की आवश्यकता अब नहीं है। उन्होंने कहा कि उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री मांडविया ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार जैविक खेती अपनाने पर जोर दे रही है। इस प्रकार की खेती में परंपरागत कृषि विकास योजना के जरिए जैविक खादों का उपयोग किया जाता रहा है। हरवीर जी, यहाँ पर जैविक खेती योजना जो अपने पूरे देश में एक अभियान के तहत विशेष जोर दिया जा रहा है, साथ ही जो मोटे अनाज हैं उन पर जोर दिया जा रहा है, तो उसे सरकार के इन कदमों को देखते हुए हम समझना चाहेंगे कि किसानों को किस रूप में लाभ हो सकेगा इन सबसे। देखिए, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उर्वरक मंत्री ने कहा है कि उर्वरकों की कोई किल्लत नहीं है। ये फैक्ट है, क्योंकि घरेलू बाजार में हमें काफी सारे उर्वरक इंपोर्ट करने पड़ते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में दाम काफी कम हुए हैं और इसलिए सप्लाई बेहतर है। सप्लाई का कोई इश्यू नहीं है। अब सवाल है कि एक लंबे समय तक जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका उपयोग करने से जो मिट्टी है उसकी सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अब हमारे पास विकल्प है, या तो हम इस तरीके का फसल चक्र अपनाएं जिसमें बहुत ज्यादा जो रासायनिक उर्वरक है उनके ऊपर निर्भरता कम हो जाए और आप अलग अलग फसल अपनाएं, और साथ में विकल्प भी ढूंढें कि जो रासायनिक उर्वरक है उनका विकल्प क्या है जो
पौधों की जो जरूरत है उर्वर शक्ति के लिए उसको उससे पूरा किया जा सके। तो उसमें एक तो बायो फर्टिलाइजर की जो बात है उसका विकल्प ढूंढा जा रहा है। दूसरे ये है कि जब आप फसल चक्र बदलेंगे तो अब जैसे खास तौर से आपने जिक्र किया मिलेट्स का, मोटे अनाजों का, उनमें उर्वरकों की कम जरूरत पड़ती है। तो जाहिर सी बात है अगर किसान आर्थिक रूप से देखेगा कि उसके लिए ये फायदेमंद है क्योंकि लागत घटेगी और दाम ठीक मिलेगा, तो उसके लिए जो नए विकल्प हैं वो बेहतर होंगे। उसमें दोहरा फायदा, एक तो उर्वरकों का कम इस्तेमाल होगा, भूमि की उर्वरता जो है वो उसमें जो गैर जरूरी उर्वरक जा रहे थे वो प्रभावित होने से बचेगी। दूसरे ये है कि अलग अलग फसलों को उगाने से मिट्टी को और बहुत सारे फायदे होते हैं। भूमि के जो उसके जो स्वास्थ्य है, मृदा स्वास्थ्य जिसे हम बोले, उसको बहुत फायदे उसमें होते हैं। प्लस एक बड़ा चैलेंज आ गया है कि पोषकता का, क्योंकि जो हमारा जो रूटीन जो गेहूं चावल का जो ये भोजन है उसमें उस तरीके का न्यूट्रिशन नहीं है जितना लोगों को जरूरत है। तो बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ कुपोषण की एक बड़ी समस्या है, आपका एनीमिया की समस्या है। लेकिन जो ये छोटे अनाज जो हैं उनको हम एक तरीके से न्यूट्रीसीरियल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें तमाम सारे जो उस तरीके के जो तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, बड़े पैमाने पर हैं। तो आपका भोजन में जब एक तरीके का वैरायटी आएगी, उसमें विविधता आएगी और ये सब अनाज आपके भोजन में शामिल होंगे तो स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर के ये एक पूरे पैकेज के रूप में हमें इसको देखना चाहिए। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में आज भी बिकवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक आधी फीसदी से अधिक गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 398 अंक यानी 0.69% घटकर 57,527 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 132 अंक यानी 0.77% घटकर 16,945 दर्ज हुआ। साप्ताहिक आधार पर देखें तो सेंसेक्स में 0.8% की 5 कारोबारी सत्र में गिरावट हुई है, जबकि निफ्टी 0.9% नीचे आकर बंद हुआ है। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों को अपेक्षाकृत सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में अधिक नुकसान आज उठाना पड़ा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.25% की गिरावट हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.37% नीचे आकर बंद हुआ। Key domestic benchmark indices closed with losses of more than 0.5%. Sensex declined by 398 points at 0.69%, went around 57,527. Nifty fell by 132 points at 0.77% to settle at 16,945 mark. For the week, the Sensex slid by 0.8% and the Nifty fell by 0.9%. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index fell by 1.25% and the small-cap index was down 1.37%. In the Sensex, which is a pack of 30 companies, shares of 6 companies gained while 24 fell. Kotak Bank gained by 0.7%, Infosys rose 0.4% and Power Grid added 0.2%. On the other hand, Bajaj Financial Services declined 3.8%, Bajaj Finance slipped 3.2% and Tata Steel fell by 2.6%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all 20 sectors logged losses. Realty sector slipped 2.3% and metal fell by 2.2%. Energy and services, both sectors declined 1.5%. The overall market breadth was negative as shares of 967 companies rose while 2,541 companies fell. A total of 122 company shares remained unchanged. Harveer, we have seen that the market has fallen for the week and today, of course, the market fell by 4%. How concerned would you be for small investors the way the market is right now, especially with FIIs and FPIs doing all the selling? Yeah, actually, our market is directly getting impact from the developments in the global market and on the global economic front. So, because big banks and lost a lot of assets, and there is some banks also run out and all sold out or closed down in big economies. It is affecting. Then FIs are selling, and even Fed also increased the rate by 25 basis yes, points. 25 basis points. So it directly affects the movement of the capital to these emerging markets like Indian market. So that it is also there. At the same time, as you said, that what
what about the small investors? Definitely those who entered in the market through mutual funds, they should remain, they should stay invested into the market, because their investment is not only in just one stock or anything. It may be very diversified into multiple stocks and debts and other things. That's why. हरवीर जी, बाजार में इस पूरे कारोबारी सप्ताह को देखें तो लगभग 3 दिन हम गिरावट के दौर को देख रहे हैं और 2 दिन लिवाली का सिलसिला रहा। कुल मिलाकर बाजार अंतर्राष्ट्रीय जगत से अधिक प्रभावित रह रहा है इस बीच में, या घरेलू कारक भी बाजार को उतार चढ़ाव का शिकार बना रहा है? मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा जो ये एसटीटी वाला जो डिसीजन हुए हैं उसको लेकर भी कुछ उसका भी कुछ लोगों पे असर आया होगा उस तरह से मार्केट के ऊपर, बट उसको काफी गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन था, देन गवर्नमेंट क्लियर इट दैट एसटीटी कितना होगा, कैसे हो, पॉइंट्स किस तरह से था। बट ये सही है कि जो वैश्विक बाजार की जो परिस्थितियां हैं और जो वित्तीय क्षेत्र है दुनिया का, उसमें जो बड़े चेंजेस आ रहे हैं, उसका जाहिर सी बात है सीधा असर हमारे बाजार पर पड़ रहा है। And what about next week when the market reopens on Monday? What should be the positions of the small investor, those who are going solo without investing through mutual funds? I think this is the time that they have to be very cautious about the market, because earlier there was some thinking that market may improve from here, but it has not come up. In this week, what kind of market we have seen? So I think there will be volatility in the market, and any investor, particularly small investors, should be cautious about the market. Do you think stop loss positions should be set? Not necessary. You know that the market is very dynamic, and our fundamentals are reasonably good, so one should not too much worry about that. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज बिकवाली तेज दिखी है। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.7% घाटे के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.4% की गिरावट हुई। बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.6% नीचे आ गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में भी 0.1% की कमी आई और जापान का निक्केई 225 भी 0.1% घाटे में ही रहा। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार की जाने तक वहां भी नरमी बनी हुई थी। अपेक्षाकृत बिकवाली तेज दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 1.9% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। फ्रांस के CAC 40 और जर्मनी के डेक्स दोनों सूचकांकों में 2.2% की गिरावट देखी जा रही थी। How concerned are you about European inflation right now? We have the central bank hiking the discount rate, or the repo rate as they call it. Have they contained it? Will they manage to contain it? Because a lot of easy money has gone into providing finance to companies which have indulged in buybacks, and right now assets have become overpriced. Now even everyday living has become expensive. Has the central bank in Europe, especially in the UK, managed to contain its inflation crisis? Yes, inflation is one of the big challenge in European market, and because European Central Bank is one side, but UK has its own central bank and currency. The Bank of England. Yes, Bank of England. So, but all these countries are struggling with higher inflation, and recently we have seen some shortage also, particularly on food products. So, but if you see at global level, that food index has come down. This FAO food index has eased, and from the peak last year, it has come down. And but still, if you see the inflationary pressure in US is not as much as in the European countries. And directly, these energy prices are also hitting common man in these countries due to this Russia-Ukraine conflict. So it is being felt, the heat. But there's also the question of indictment of a top nation. Do you see that also affecting markets? Actually, there are multiple factors on these things, and we have seen, many developments are happening in the capital market and debt market and financial sector in this area.
and continuously central banks trying to increase the policy rates to control the inflation. I think they must have changed some strategy at this stage, because beyond a point, now the common man is being affected badly due to price rise. हरवीर जी, यहाँ पर यानी हम ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहेंगे यूरोप और यूक्रेन के बीच में लगातार जारी संघर्ष के, इसके आयाम क्या वास्तव में पूरी यूरोप की अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही, जिसके चलते खाद्य के मोर्चे पर भी और ऊर्जा के मोर्चे पर भी प्रभावित होना पड़ रहा? बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो कोविड के बाद, एक तो कोविड का जो डिसरप्शन था जिसने दुनिया की पूरी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया था, उसके बाद पिछले साल फरवरी में जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ 2022 में, तब से बहुत सारे डिसरप्शन आए, सप्लाई चेन का प्रॉब्लम आया और बहुत सारे कमोडिटीज का मूवमेंट पे असर आया और अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। बहुत सारे देशों में रिफ्यूजीज का भी एक प्रेशर आया वहां पर, यूरोपियन कंट्रीज में जो लोग यूक्रेन से गए हैं। सो ये लगातार प्रभावित कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि जो अगर हम देखें कमोडिटी प्राइसेस ईज हुई हैं दुनिया में, खासतौर से फूड प्राइसेस, एडिबल ऑयल हो या व्हीट प्राइसेस हो, वो काफी कम हुए हैं। तो लेकिन ये जो एनर्जी वाला प्रॉब्लम है ये ज्यादा मुश्किल भरा उनके लिए, और वहां पर एनर्जी की ज्यादा जरूरत भी होती है। हालांकि विंटर्स धीरे धीरे वो लोग जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन वाला टाइम होता है उससे बाहर आ रहे हैं, बट जो लोगों की अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो उनके लिए काफी दिक्कतें पैदा कर रही हैं। In more news from the U.S. market, Wall Street closed higher yesterday following the reassurances given by the U.S. Treasury Secretary Janet Yellen to take measures to keep the Americans' deposits safe. The Nasdaq Composite Index gained 1%, while the S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average both added 0.2% each. Harvi, very briefly, what is the banking system like right now? Now we are getting news from Deutsche Bank that its share values have fallen by 14% because of insurance costs going up against default. Yeah, you see, in Europe we have seen the Credit Suisse, and it was bought by UBS at a very low level. What kind of asset Credit Suisse has? Almost 50% lower than that. And this is, again, if insurance cost will go up, it will affect, and Deutsche is one of the biggest bank in Europe. So it is not a very good news after some American bank failed, and US is also saying that even the US president came and gave a statement that our banking system is strong and intact, but things are happening on the other side. That is not a very good news even for the global financial system. Let's have a look at the oil market. Now oil prices fell sharply today after the statement by the US Energy Secretary saying that refilling the strategic petroleum reserve may take several years. In intraday trade, Brent crude was trading at around $72.75 per barrel, while WTI crude price was at $66.95 per barrel when reports last came in. Why this sudden fall in prices? If the reserve is falling, prices should go up? No, actually, we have seen that all multilateral organizations reduce the growth number for the global economy, and it shows that there may be some economic activity on the slowing down and demand will be low for the energy. आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल में आपूर्ति की जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 113 रुपए बढ़त के साथ 59,675 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मई में आपूर्ति वाली चांदी 270 रुपए उछलकर 70,480 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर चलें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना थोड़ा सा मजबूत होकर $2,013 प्रति औंस के स्तर पर चल रहा था। चांदी भी बढ़त के साथ $23.35 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हरवीर जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Lok Sabha passes the Finance Bill 2023, GST Appellate Tribunal to set up across the country, and key domestic indices close with losses of more than 0.5%. Sensex slips 398 points. Nifty settles below 16,950 level. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.